Hello students, how are you all? I hope you all are fine and active at your home. So today in this session we are going to learn about introduction to computers, right? Computers are multi-purpose machines that can be used to solve variety of problems in different fields. Computers have changed the way we live, work and communicate. Computers are useful in industries, government, education, research as well as entertainment sectors. From routine business activity in a given area to a spectacular task, computers are applicable everywhere, right? We all know that computers are used in each and every field nowadays. That is why a computer is called multi-purpose machine. The next one is working of a typical computer, right? Computer work कैसे करता है? Just as a calculator calculates, the driver drives and painter paints, the computer computes. The computing here is not restricted to only mathematical computing but to a variety of logic based tasks. One only need to systematically design step by step clear guidelines for the task to be solved. मतलब कि किसी को अगर कुछ काम करना है तो उसको क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस चाहिए. दिस गाइडलाइंस जनरली रिटर्न इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड अल्गोरिथम. जैसे कंप्यूटर को भी हम कुछ काम करवाने के लिए कुछ स्टेप्स देते हैं और उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या बोला जाता है उसको, अल्गोरिथम. Computer once given proper set of instruction can perform operations like generating bills, reserving tickets, printing mark sheets, printing business reports or communicating messages. Computer can also deal with audio, video, graphs and animations beside text and numbers. Computer also can handle this type of objects like audio, video, graphs, right? Once the computer is given data and step-by-step instruction, it then performs computations and generates result or perform an action as an output. The set of data and instruction provided by a user to the computer is called input. That means we are giving some input to the computer, right? And that is known as input. Computer processes दिस इनपुट एंड प्रेजेंट्स रिजल्ट टू द यूज़र. कंप्यूटर उस पर क्या करेगा, आपने जो इनपुट दिया उस पर प्रोसेस एंड फिर हमको क्या देगा, रिजल्ट. द रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट. कंप्यूटर कैन रिमेंबर दिस डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेटेड रिजल्ट फॉर द फ्यूचर यूज बाय स्टोरिंग द डिटेल्स इन मेमोरी. अगर आपको कंप्यूटर ने एक बार कुछ इनपुट दे दिया है, उसको सेव करके अगर रखना हो तो आप उसको मेमोरी में रख सकते हो, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही काम करवाना है तो कंप्यूटर को वही इंस्ट्रक्शन बार बार न देनी पड़े. This simple flow of working of computer is shown in figure. Input, process, output, right? So input, that means takes data and instruction from the user. Process remembers data and executes instruction, and in output presents result to the user. Further, it is not compulsory to repeat the instruction and enter large amount of data every time we use the computer. We can store the data and instruction within the computer itself in such a where that it can be understood by machine, that is in machine readable language. मतलब कि हम एक बार कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है दैट इज बाइनरी 0 and 1, उस लैंग्वेज में अगर उसको हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे तो फिर वो कंप्यूटर याद रखता है, तो बार बार हमें वही बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज इन मशीन स्टोरिंग सच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूजफुल रिपीटिव परफॉर्मेंस of the task. Once the set of instruction in machine readable format called the program is stored in a computer, it can be used many times with different set of data. This concept known as storage program concept. मतलब कि एक बार अगर आप कुछ कंप्यूटर को दे देते हो और उसको सेव करवा के रख देते हो तो वो बार बार उसको यूज़ कर सकता है, एंड इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट. Following simple list presents some सैम्पल एप्लीकेशन टू हाईलाइट यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट एरिया. मतलब कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो टिकट रिजर्वेशन में, बैंक ऑपरेशंस में, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट में, एंटरटेनमेंट सच एज प्लेइंग गेम, कंपोजिंग म्यूजिक एंड एडिटिंग मूवीज़, टीचिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, करस्पॉन्डेंस एंड पब्लिशिंग, राइट. जैसे आपको कुछ न्यूज़पेपर बनाना है, कुछ ब्रोशर बनाना है, लेटर्स राइट करने, बुक्स एक्सेट्रा. स्पेस एप्लीकेशंस, रोबोटिक्स में, ईमेल एंड चैटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सेट्रा, राइट. दिस आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट वन इज सिंपल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर. द सिंपल मॉडल of a typical computer is based on the working of computers shown in the figure.
दैट मीन्स इन IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, IPO साइकिल. As we have discussed, instructions are needed to make computers perform some actions. To obey instruction provided by the user and perform computations, a computer needs to have mechanism to input. The input mechanism helps in feeding data as well as instruction into computer. This mechanism is called इनपुट यूनिट. मतलब कि आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन सेव करके रखते हो और एक मैकेनिज्म यूज़ करते हो कि हम डेटा सेव करके रखते हैं, तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, इनपुट यूनिट. डिवाइसेस यूज्ड फॉर द इनपुट पर्पस आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस. मतलब कि ये काम करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस. टिपिकली इनपुट डिवाइस सच एज माउस एंड कीबोर्ड आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. वी ऑल नो दैट main two input device, mouse and keyboard. Input provided through the input mechanism is stored in memory of computer and further processed by mechanism called processing unit or processor. मतलब कि हमने कोई एक इनपुट यूनिट में कुछ प्रोग्राम स्टोर करके रखा है, उसके बाद क्या होगा, वो प्रोसेस, उसको क्या बोलेंगे, इस मैकेनिज्म को प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर. रिजल्ट्स आर presented to the user through the output mechanism called output unit. Typical output devices are monitor and printer. Most two important output device is monitor and printer. In short, the input, memory, processor and output are the basic component of typical computer. This is the important topic. What are the main basic component of typical computer? So memory, processor, output and input. The next is input unit. The input unit provides a facility to enter data and instruction into the computer. Input mechanism supports many devices such as keyboard, mouse, joysticks, barcode reader, universal serial bus devices, hard disk and compact disk. These all are the input devices. Different input devices take data in different form and send it to the computer memory. For example, use of keyboard to enter data and instruction is very much similar to the use of typewriter, right? कीबोर्ड किसकी तरह होता है, टाइपराइटर की तरह ही. अगर आपने देखा हो तो टाइपराइटर, उसमें क्या होता है, कीबोर्ड की तरह ही आपको स्विच दी जाती है, वो ओपन करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो. अनदर वे टू इनपुट डेटा इज रीडिंग थ्रू बारकोड रीडर. बारकोड रीडर इज नॉर्मली सीन एट सुपर स्टोर. आप कोई मॉल में जाते हो या शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहाँ पे जिसको स्कैन करके आपको मॉनिटर पे प्राइस दिखाता है, वो क्या होता है, बारकोड रीडर. Remember, when you purchase a pack of biscuit, the shopkeeper uses a small device and presses a button on the device. With sound of a beep, a barcode printed on a tag of the biscuit pack is read and copied to the computer in order to generate bill. Mouse is also used to input data into computer. Mouse is a device that controls movement of the pointer, also known as cursor, on the display screen. It is a small object with a few buttons which you can roll on hard surface, right? Mouse का use हम सबको पता ही है. As mouse is moving on the surface, the pointer on the display screen is also moved. A mouse must have at least one button. Most of the input device convert the data into machine readable form. जो input device होती है वो जो डेटा लेता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में और मशीन रीडेबल फॉर्म, दैट मीन्स 0 and 1 में. The next one is memory and control unit. Once input is collected via input devices, the input is needed to be stored into computer memory. Computer memory retains data instruction and processed output for a while or short duration or a long time. There are different types of computer memories. Some computer memories are capable of remaining the content for very short duration, say till the work is in progress and continuously supply of power is ensued. मतलब कि अब जैसे हम डेटा हमने लिया वैसे ही उसको फिर क्या मेमोरी में स्टोर करना ज़रूरत है. और वैसे कई मेमोरी है तो कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो डेटा स्टोर करके रखती है, मतलब कि जब तक वो प्रोसेस होती है तब तक ही. सच मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी. ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, वोलेटाइल मेमोरी. सच मेमोरी फॉर्म्स प्राइमरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट इज known as primary memory. It is also called as temporary memory और main memory. तो कौन से नाम से जाना जाता है उसको, temporary memory, main memory, primary memory and volatile memory. The input from different devices go first to the main memory and will be retained into the memory electronically. The content will remain in the memory till this computer is switched off. मतलब कि जब तक आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं करते तब तक वो कंटेंट उसमें सेव करके रहता है.
When computer is switched off or reset, the content will be lost. To preserve the content for a long, we need secondary or auxiliary storage. अगर आपको ऐसा कुछ डेटा स्टोर करके रखना है कि आपको परमानेंट, तो कौन सी मेमोरी चाहिए आपको? सेकेंडरी, और उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी स्टोरेज. द सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी इज नॉट वोलेटाइल एंड कंटेंट कैन बी preserved for a long time. Devices that use secondary memory are called secondary storage device. Hard disk, compact discs are the most पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, राइट. तो सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है? आपका डेटा सेव करके रहता है. जैसे हम आपको कुछ डेटा सेव करके रखना है तो जैसे हम हार्ड डिस्क में रखते हैं ना, तो ये सब क्या है? उसके स्टोरेज डिवाइस है. अनलाइक द प्राइमरी मेमोरी, द सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल, स्लो, लेस एक्सपेंसिव एंड लार्ज इन कैपेसिटी. As mentioned, once the data and instruction are entered into the memory, instructions are executed and result is prepared. As per the requirement of the user, the result is preserved in the memory or sent to the output unit. जैसे रिजल्ट बन जाता है फिर उसको कंप्यूटर क्या करता है? आउटपुट यूनिट को सेंड कर देता है. To execute instruction, the computer needs to perform some arithmetic and logical computations. The arithmetic and logical computation are performed by unit called arithmetic logic unit, right? कभी कभी क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी चाहिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वो कौन सा यूनिट करेगा? अरिथमेटिक लॉजिक unit. Beside the ALU, there is a control unit which manages execution of instruction and control operations of other component of the computer. ALU and control unit together form central processing unit, right? control unit भी होता है कि जो other execution क्या करता है? manage. और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? CPU, right? It is also called the brain of computer. Some high speed memory can also be a part of CPU. तो हमने क्या देखा है अभी? Input unit, then memory and control unit. Now the last is output unit. The output unit is normally a visual screen called monitor. The monitor actually refers to a wall box of the visual output mechanism of a computer. Display screen is a part of the monitor. Many times we use monitor and display screen as synonyms. The older monitors used to provide black, white and grey set output, but आजकल हम देख रहे हैं कि कलरफुल टीवीज आ गए, विच यूजुअली वॉज द टेक्स्ट एंड नंबर्स. प्रेजेंटली कलर मॉनिटर्स आर that are capable of presenting variety of information such as high quality graphics and animations are available. हम अभी 3D मूवीज़ देखते हैं, राइट, एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं, तो आजकल के पीसी में हम वो देख सकते हैं. पहले क्या था? वाइट, ब्लैक एंड ग्रे सेट के आउटपुट ही आपको उस मॉनिटर में दिखाई देते थे. टू आउटपुट साउंड, स्पेशल डिवाइसेस सच एज स्पीकर एंड हेडफोन्स आर यूज्ड. टू प्रिंट द आउटपुट, प्रिंटर्स आर यूज्ड. Optionally, output is directly published on the website or sent as a file via internet, right? उसको आप डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हो कोई वेबसाइट पर, उसको हम फाइल भी सेंड कर सकते हैं वाया इंटरनेट. द कंपोनेंट्स आर शोन इन द फिगर. क्या होता है? पहले प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी पहले हम क्या देते हैं? इनपुट. वो कहाँ पे होता है? कंट्रोल यूनिट और ALU, आप जो भी बोलो उसको पूरा बन के क्या बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और उसके साथ क्या कनेक्टेड होती है? हमारी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. देन हमें लास्ट में क्या मिलेगा? आउटपुट. तो दीज आर दी बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. द इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग मैकेनिज्म आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन लेटर चैप्टर्स. वो हम डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. So computers are very useful because their characteristics like automation, accuracy, long-term storage, consistency, and programmability. These characteristics describe the efficiency of the machine to execute the given task. Hence, these characteristics are also known as efficiency-oriented characteristics. इतनी सारी characteristics उसकी है, automation, accuracy, right? So, these characteristics are described below. The first one is automation. What is automation? Computer can automatically perform a given task. Once data and necessary instructions are stored into the computer memory, human intervention is not required. एक बार, जैसे हमने पहले बात की थी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, कि एक बार आप कंप्यूटर को डेटा एंड इंस्ट्रक्शन उसको दे दो तो फिर वो खुद से काम कर सकता है. Some jobs such as searching from a large repository of data are nearly impossible without such automation, right? आपको अभी देख सकते हो कि गूगल पे आप कोई भी सर्च कर सकते हो कंप्यूटर का यूज़ करके. तो इतने बड़े डेटाबेस में से डेटा सर्च करना हो तो भी कंप्यूटर आपको करके देता है. द नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी. कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन विद द हाइस्ट एक्यूरेसी.
प्रॉपरली डिजाइन कंप्यूटर्स प्रोवाइड हाई एक्यूरेट रिजल्ट्स. एक्यूरेट मतलब कि वो अपनी जो भी वर्क करता है उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं करती computers. However, it is obvious that garbage results are produced by garbage input entered knowingly and unknowingly. कभी कभी हम गलत या गार्बेज मतलब कि गलत इनपुट दे दे तो वो गलत आउटपुट क्या करता है हमें देता है, अदरवाइज वो एक्यूरेट रिजल्ट ही देता है. दिस इज कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर उसको आप गलत आउटपुट देगा तो गलत आपको इनपुट दोगे तो गलत आउटपुट देगा. उसको क्या बोलते हैं? GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट. Long-term storage. Computers can store large amount of data in its secondary storage for long time. The storage content can be recalled easily on request unless specifically asked. The content will be preserved in the memory. उसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होगी तब उसको हम क्या कर लेंगे? Retry. Programmability. Computers can be programmed to execute predefined set of instructions. Writing programs once and executing it many times saves a lot of time and cost. The program once written can be modified later for the revised task. Therefore, computers are versatile to perform any activity provided a step by step program is given. Right? एक बार आपने कोई प्रोग्राम उसमें स्टोर करके रख दिया, फिर आप उसको जब भी रिवाइज करना हो या रीयूज करना हो तो आप उसको कर सकते हो. इससे क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा. फिगर डेमोस्ट्रेट्स प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. राइट? कंप्यूटर क्या बोलता है? आई एम फास्ट, आई एम ऑटोमेटिक, आई एम प्रोग्रामेबल, आई कैन रिमेंबर स्टफ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम एक्यूरेट. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. द नेक्स्ट वन इज software. Right? So far we have learned that computer is multi-purpose machine and cannot perform any task on its own. It's needed data and step-by-step machine understandable instruction to perform the intended task. मतलब कि खुद से कुछ काम नहीं करता, हम उसको क्या देते हैं? Data and instruction. This set of instruction is called program. This is the definition of program. What is program? The set of instruction is called program. Development of a program become easier if a step-by-step guidelines to solve the task कॉल्ड अल्गोरिदम इज डिज़ाइन. मतलब कि ऐसा कोई हम अल्गोरिदम डिज़ाइन कर ले कि हम उसको क्या देते? स्टेप बाय स्टेप काम. तो जो ये डेवलपमेंट है प्रोग्राम का क्या हो जाएगा? ईजियर. द लॉजिक प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग द गिवन टास्क डन यूजिंग अल्गोरिदम इज नोन एज सॉफ्टवेयर. राइट? Software refers to organization collection of computer programs, data and related documentation about the computer program. Right? Figure illustrates the components of software. कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. द नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर. अनलाइक सॉफ्टवेयर, द हार्ड एंटिटीज सच एज कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस आर कंसिडर्ड एज फिजिकल एंटिटीज and hence called hardware. Hardware is a comprehension term for all physical part of a computer. The next one is firmware. हार्डवेयर समझ में आ गया क्या होता है? हार्डवेयर इस कीबोर्ड, माउस, CPU सबको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव, स्पीकर्स, ऑल इट्स नोन एज हार्डवेयर. Last one is firmware. Software instruction many times come integrated along with hardware. Since such software is closely coupled with hardware, it is known as software. Right? कभी कभी क्या होता है कि कुछ हार्डवेयर का पार्ट सॉफ्टवेयर के साथ ही आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर. The software embedded with the hardware usually facilitates use and applications of the hardware. It is also provide utility to work with the other hardware and communicate data when needed. Usually such firmware are developed by the hardware manufacturing company and provided free when one purchase the hardware. Right? कभी कभी क्या आता है? उसके साथ आता है. तो कभी कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको हार्डवेयर के साथ ही आपको प्रोवाइड कर देती है. फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट्स, डिजिटल कैमरा, माइक्रोवेव ओवन हैव सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इनबिल्ट इन द डिवाइसेस. आप वॉशिंग मशीन लेते हो तो उसमें उसका सॉफ्टवेयर के साथ ही उसका डिज़ाइन होता है, जो भी वर्क होता है जो सॉफ्टवेयर उसका. Later you will learn what type of memory is used for firmware designing. The exercise of this chapter we will see later. Thanks for watching.